Hello students, welcome to IBPS Guide YouTube channel. Today we will discuss some Hindu editorial vocabularies which are taken from Hindu editorial. Before starting our session, I want to request you to see our description box, and for more vocabularies you can click ibpsguide.com. इसमें आप लोगों को और भी ज़्यादा मटेरियल भी मिलेगा और लिंक भी मिलेगा, एंड which will be very much helpful for your previous upcoming examination and any competitive examination. And you also can purchase our mock test, and these mock tests are very much beneficial and very much helpful, and which is a full of upgraded material. So let's start our today's session, that is English vocabularies, editorial vocabularies. Let's move to our slide number 1. Our first word we get, that is tailspin. Tailspin is a verb, that is parts of speech, that is a verb, and verbs is action word. The word which express any actions, that is called verbs, and tailspin is a verb. Tailspin means become increasingly chaotic and out of control. जब कोई भी situation बहुत ज़्यादा कैटिक होते हैं, इंक्रीजिंगली कैटिंग हो जाते हैं एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेल स्पिन. अपार्ट फ्रॉम दैट और एक मीनिंग भी टेल स्पिन का है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. When the airplane is falling rapidly while turning around and around, this is also called tailspin. जब एरोप्लेन ड्यू टू सम रीजन फॉलिंग होना शुरू होते हैं, रैपिडली फॉल करते हैं और राउंड करना शुरू कर देते हैं, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड टेल स्पिन. सो अल्टीमेटली टेल स्पिन इज अ नेगेटिव वर्ड, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ टेल स्पिन इज बिकम इंक्रीजिंगली chaotic and out of control. That's why the synonymous word will be breakdown, crack up, nervous breakdown. So all will be the negative word: breakdown, crack up, and nervous breakdown. Antonyms will be calmness, composure, containment, and ease. Uses देखो, an economy tail spinning into chaos. An economy tail spinning into chaos. Economy जो है वो tail spinning हो रहा है, क्या chaos में हो रहा है. So economy जो आज के दिन में out of control हो रहा है, increasingly chaotic हो रहा है. So that's why an economy tail spinning into chaos. तो tail spin होता है क्या, become increasingly chaotic and out of control. Our next word we get, that is defector. Defector is a noun, and this is noun means that is a naming word. This is an abstract noun also, because the naming word which will feeling, which are express some feelings, which are express some idea, these are called abstract noun. So defector is a person who has abandoned their country or cause in favor of an opposing one. Defector हम उसी person को बोलते हैं जो person को abandon मतलब left हो जाते हैं अपने country से, to cause in favor an opposing one. किसी चीजों को oppose करने के लिए अगर country से कोई abandoned होते हैं, they are called defector. तो synonymous word we can say that deserter, turncoat, traitor, rebel, and regenerate. रेबेलियन या रेबल, देयर इज अ क्रांतिकारी जिसको हम कहते हैं, जो अपोज करने के लिए अगर अपना कंट्री छोड़कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड डिफेक्टर. एंटोनिम्स विल बी पैसिविस्ट, दोज हु आर नॉट एनी रेवोल्यूशन, नॉट मेक एनी रेवोल्यूशन, दोज हु आर नॉट मेक एनी रेबल, दे आर कॉल्ड पैसिविस्ट. Uses देखो, staff interviewed escaped and defectors to the west. Staff interviewed escapes and defectors to the west. So defector is a person who has abandoned their country. The person who has abandoned their country, they are called defector. Our next word, that is impel. Impel is a verb, means action word. Impels होता है क्या, फोर्स करना, किसी भी चीजों में फोर्स करना या अर्ज करना, किसी चीजों की अर्ज करना या ड्राइव करना. Therefore the synonyms will be force, compel, constrain, oblige, and necessitate. Antonyms will be discourage, dissuade, and rebuff. Financial difficulties impelled him to desperate measures. Financial difficulties impelled him to desperate measures. जो financial difficulties उसको force किया था desperate measures उठाने के लिए. So financial difficulties impelled him to desperate measures. Our fourth word we get, that is lure. Lure is a verb. Lure होता है कि tempt to do something or go somewhere, especially by offering some from reward.
विच इज़ वेरी लुक्रेटिव, विच इज़ वेरी प्रॉफिटेबल, उसके लिए कुछ करना, उसके पास कुछ जाना, दैट इज कॉल्ड ल्यूर. तो टेम्प्ट मे बी पर्सन और एनिमल टू डू समथिंग, कुछ करना, और गो समवेयर, कहीं पे जाना, स्पेशली बाई ऑफरिंग सम फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, कुछ रिवॉर्ड के लिए या कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए या कुछ रिवॉर्ड ऑफर करने के लिए कुछ करना, कुछ जाना, दैट इज कॉल्ड ल्यूर. The synonyms will be tempt, entice, attract, induce, coax, and persuade. These all are the synonymous word of lure. Antonyms will be deter and put off. The child was lured into a car but managed to escape. The child was lured into a car but managed to escape. कुछ रिवॉर्ड के लिए ल्यूर्ड किया था बट मैनेज टू एस्केप कर लिया. सो ल्यूर्ड इज अ वर्ड बट इज एक्शन वर्ड, मतलब टेम्पटेशन टू डू समथिंग और गो समवेयर. Our next word we get, that is augment. Augment is also the verb, action word. So augment means make greater by adding to it. कोई भी चीज को इंक्रीज करना, ऐड कर करके इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंट. इसका नाउन फॉर्म होगा ऑगमेंटेशन. To make something greater by adding to it. कोई भी चीज को ऐड करके किसी को बड़ा करना, that is called augment. Synonymous word इसकी हो सकता है increase, make larger, make bigger, make greater. Opposite definitely decrease. He augmented his summer income by painting houses. Augmented his summer income. Summer की income वो augment करती है, बढ़ाती है, by painting house. पेंट करके, घर को पेंट करके. So augment means increase. Question number word number sixth जो word हमारे पास आया है, that is scion. Scion is a noun. Scion होता है कि a descendant of a notable family, मतलब a person who born in very rich family, who was born into a very rich, famous or important family, they are called scion. So that's why the synonymous word will be descendant, offshoot. Scion is a very common word, जो rich family में belong करती है, जो rich very notable family में belong करती है, या कोई important family में belong करती है, they are called scion. Antonyms will be ancestors and predecessors. He was a scion of a wealthy family. मतलब he was a scion of wealthy family. wealthy family में वो belong करती है. descendant वो कौन सी family की है? ना very wealthy family की है. तो descendant of very wealthy and notable family, they are called scion. Our next word we get, that is amass. mass मतलब ही होता है क्या? ज्यादा. mass people. तो इसके आगे अगर a लग जाए, that is the prefix a अगर लग जाए, तो definitely it will be large amount of. And amass is a verb. That's why a large amount of or number of people, number of material, number of things, बहुत ज्यादा अगर कुछ चीज है, that is called amass. That's why gather together or accumulate over a period of time. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से कोई भी चीज को जब हम गैदर करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमास. दैट्स व्हाई सिनोनिमस वर्ड विल बी गैदर, कलेक्ट एंड असेंबल. एंटोनिम्स विल बी डिसिपेट. He amassed a fortune estimated at a close to the £1,000,000. He amassed a fortune estimated at close to £1,000,000. Amass a fortune. That's mean क्या? जो gather किया, fortune को gather किया, estimated a close to £1,000,000. So mass याद रखने से amass याद रख सकते हैं, क्योंकि mass people, mass मतलब भी क्या है? In general people, in बहुत ज्यादा. तो that's why a इसके साथ add करने का मतलब a large amount of or large number of. Next word we get, that is hamstring. Hamstring is a verb, and hamstring means severely restrict the efficiency or effectiveness of. Hamstring that is a severely restrict. जब severely किसी भी चीजों में restrictions होते हैं, जैसे कि handicapped, तो they are the hamstring. Severely restrict the efficiency. कोई भी एक efficiency अगर restricted हो रहा है, काम हम नहीं कर पा रहे हैं due to some reason, that is called hamstring. So that's why synonyms will be handicap, constrain, restrict and cripple कर देना. जो पावर और एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को जब रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग. एंटोनिम्स विल बी यूजेस. वी वर हैमस्ट्रिंग बाय अ टोटल लैक ऑफ नॉलेज. जो टोटल लैक ऑफ नॉलेज ना होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या हुआ? वी वर हैमस्ट्रिंग. हम सीवियरली रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं. तो जब कोई भी एफिशिएंसी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग. नेक्स्ट वर्ड वी गेट, देयर इज क्लच.
क्लच मतलब होता है क्या, किसी भी चीजों को टाइटली होल्ड करके रखना, दैट्स वाई ग्रास्प टाइटली, टाइटली होल्ड करना, टाइटली समथिंग होल्ड समथिंग टाइटली, दैट इज कॉल्ड क्लच. Synonyms will be grip, grasp, clasp and cling to. Abundant antonyms हो गई, left कर देना, disbelieve, forsake and free. He stood clutching a microphone. वो खड़ा था एक माइक्रोफोन पकड़ के. So he stood clutching a microphone. Next word, that is demolish. Demolish is a noun. Demolish होता है कि overwhelmingly defeat. कोई भी चीजों को ओवरहेलमिंगली मतलब बहुत बहुत बुरी तरीके से अगर कोई डिफीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डेमोलिश. तो डिफीट किसी प्लेयर को या किसी टीम को हरा देना, दैट इज डेमोलिश. दैट्स वाई सिनोनिम्स विल बी डिफीट अटरली, बिट होलो, विन अ रिसाउंडिंग विक्ट्री ओवर. एंड एंटोनिम्स विल बी इम्प्रूव. जब कोई भी चीज को हमने इम्प्रूव करती है, दैट विल बी इट्स एंटोनिम्स. एंटोनिम्स विल बी इम्प्रूव, inspect, make, increase and develop. These all are the antonyms of demolish. Uses देखो, arsenal demolish city 3.0. Demolished मतलब ही होता है कि there is a defeat. Defeat word, that is completely defeat, चाहे वो players को हो चाहे वो team को हो, that will be called demolish. So demolish is a noun, and one thing ध्यान रखना, demolish is an abstract noun. Defeat करना. So these are 10 words which are taken from Hindu editorial newspaper. If you're taking IBPS PO vocabulary, so you can go through that IBPSguide.com vocabulary link in description box, and you get, my dear students, you get this type of words और भी बहुत ज़्यादा this type of words तुम्हें मिलेगा. IBPSguide.com इस साइट पे जाना एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर सर्च करना. इसमें प्रीवियस वर्ड्स भी हमें मिलेगा, एंड नॉट इवन दैट, अभी जो कंटेम्पररी वर्ड्स जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग वर्ड्स वोकैब्स चल रहे हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत हेल्पफुल होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी डे वी विल गिव सम 10 एडिटोरियल्स वर्ड विच आर टेकन फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर. ये तो चलेगा ही, बट इसके एक्स्ट्रा अगर कुछ लेना चाहते हो तो यू कैन गो थ्रू IBPSguide.com and vocabulary links, and definitely go through our description box. I hope it is clear to you, and these are very common word, and which is a very common word for comprehension and close gap completion, and not even close gap. These words just demolish, clutch, कुछ words जो hamstring, these are words are also used in parajumble and sentence rearrangement also. So my dear students, learn these words with help of uses. Without uses, these words cannot be useful for you. So जब भी तुमने learn करोगे, जब भी आप लोग learn करोगे, इसको सेंटेंस के साथ लर्न करना, सेंटेंस के साथ ट्राई करना अंडरस्टैंड करने के लिए, देन इट विल बी इजी फॉर यू. एंड फॉर मोर enhancing your English level, enhancing your competitive exams level, you can buy our mock test also, mock test series also, and these mock tests are very much helpful, and these questions are all the questions are in very new pattern के questions हमने बनाए हैं, and these all questions are important for you, not even important, but also it is a very helpful and contemporary. So go through this and try to go through our mock test and see the in description box. So tomorrow again I will come and bring some different type of questions and different type of Hindu editorial vocabularies for you, and which will be beneficial for you. Till then, goodbye, have a nice day.